Okay, then, good evening, everyone. So, today we have our mathematics class. Now, I am sharing my screen. Please let me know that the screen is visible to you. I hope it is. Okay, so is it visible? It is visible for few, it is not visible for few. Okay, we'll do one thing. Let me just get out of the meeting and I'll join back right back. Okay. Okay, so I have joined again, and I hope the screen should be visible now, right? Okay, so we have started the chapter that is ratio and proportions. So I think we had a lecture last week itself, and we have covered few points in that lecture as well. So who were the absent students? I think Kadambari was just absent, but बाकी सब लोग तो present थे. Okay, no problem. So let's move ahead and just to revise the things like whatever we have seen in the previous lecture. So I will quickly revise that, and after that we can move to the next portion. Okay. So let us suppose we have a ratio that is given like this: x by y is equals to 4 by 5. Then we have to find the value of this ratio. So before that, we have seen some operations on ratios. So what are those? We are going to revise that. Okay. This is the summary of operations that we usually perform on ratios. Okay, so the first operation is invertendo, second operation is alternendo, third operation is componendo, and fourth operation is dividendo, and the last operation that we perform is componendo and dividendo. So you must be knowing what is invertendo. Invertendo is basically, let us suppose we have a ratio that is a by b is equals to c by d. So we can write this ratio in this form, like we can invert this a by b to b by a, and then we will invert this c by d to d by c. So this is called invertendo. Now next operation we have is alternando. So in alternando what we do is we alternate the denominator of first one and numerator of second one, like we will exchange these two elements, right? So this is operation called alternando. So this is pretty easy operations. There's no like anything hard in it. सो देन वी हैव कॉम्पोनेंडो. इन कॉम्पोनेंडो व्हाट वी डू, कॉम्पोनेंडो में हम जो डिनोमिनेटर होता है उसे न्यूमरेटर में ऐड करते हैं, एंड डिनोमिनेटर विल बी इन डिनोमिनेटर इटसेल्फ. सो जस्ट द थिंग इज वी ऐड denominator in the numerator, so that is componendo. And when we divide sorry, when we subtract denominator from numerator, then that is dividendo. So let us suppose we have ratio a by b is equals to c by d. Then जब हम dividendo operation perform करेंगे, so क्या होगा, a minus b divided by b, मतलब कि यहाँ पे b जो है वो डिनोमिनेटर है, isn't it? So b डिनोमिनेटर है तो हम b को a से subtract करेंगे और उसे b से divide करेंगे. Similarly on the right side what we will do, we will subtract d from c and the denominator will be again d itself. So this is componendo and dividendo. So when we perform these both operations simultaneously, let us suppose in the numerator we add the denominator, and in the denominator we subtract the denominator. So that is a plus b divided by a minus b is equals to c plus d divided by c minus d. So that is called as componendo dividendo operation. Okay, so we have seen this like operations in the last class itself, and this was the revision for that. Now, let us solve one question on that topic.
I think somebody has his or her mic on. No, okay, everybody is on mute. Okay, so guys, any problem, students, any problem with the operations that we have just seen? कोई डाउट है तो पूछ लो. Okay, and you have to, okay, no doubt, great. Okay, so everybody is responding, that's great. So whenever you solve doubts in your exam, whatever exam it is, you have to write all the steps. Okay, you just cannot take shortcuts. Okay, shortcuts are accepted in MCQ exams, but when you write your board exams or school exams, you have to write all the steps. Okay. So the question here is, let us see, if x by y is equals to 4 by 5, then find the value of ratios 4x minus y divided by 4x plus y. So what operation first of all we are doing here? See, x by y is equals to 4 by 5. So 4x by y is equals to 16 by 5. तो हमने यहाँ पे 4x क्यों लिया? Because we have to find out the value of this. So we are multiplying both sides by 4. So this becomes 4x by y. Since we have multiplied by 4 to this side, we have to multiply to this side as well. So 4 into 4 will be 16, right? So 16 by 5. तो अभी यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? We will perform कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो ऑपरेशन. ओके, सो कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो ऑपरेशन में हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर में से, सॉरी, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लिखते हैं. सो दिस इज द ऑपरेशन. बट यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालने के लिए बोला है? एक्चुअली दिस इज इन्वर्टेंडो एंड कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो, मतलब ये इन्वर्ट है, इजंट इट? यहाँ पे हमें माइनस जो है वो डिनोमिनेटर में चाहिए, तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर में है. सो हाउ कैन वी डील विद दिस? सी, so 4x plus y divide by 4x minus y. So 16 plus 5 divide by 16 minus 5. So ये क्या हुआ? 21 by 11 हुआ. लेकिन हमें इन्वर्ट चाहिए, तो हमारा जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से हम दोनों साइड्स को इन्वर्ट करेंगे. सो वी विल गेट इट एज 11 by 21. I hope this was pretty clear for you. Okay, so that's it, and we will move to the new topic now. सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशियोज? तो अभी अभी हमने ये रेशियोज वगैरह सीखा. सो एवरी पॉइंट इन मैथमेटिक्स, या फिर कोई भी चैप्टर आप मैथमेटिक्स में लीजिए, तो उस चैप्टर का या फिर मैथमेटिक्स का जो यूज है वो हमें रियल लाइफ में करना बहुत जरूरी है, इजंट इट? हम सिर्फ पढ़ने के लिए या फिर मार्क्स स्कोर करने के लिए मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं. वी हैव टू अप्लाई द थिंग्स. मतलब अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड थिंग अगर हम पढ़ रहे हैं और उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है हमें, तो उसे पढ़ने का क्या मतलब, इजंट इट? सो वी विल सी व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ equal ratios. Application means how we use those properties in real life, or to solve problems. Okay, so that is called operations or applications. To solve some types of equations, it is convenient to use properties of equal ratios rather than using other methods. Okay, so अगर हमें कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए हम ये प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, मतलब दूसरी मेथड्स को यूज करने के अलावा हम ये जो प्रॉपर्टीज है इनका यूज करके हम उन इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो विच आर दोज इक्वेशंस? So see, first equation, solve the equation, this one. So 3x square plus 5x plus 7 divided by 10x plus 14 is equals to 3x square plus 4x plus 3 divided by 8x plus 6. सो यहाँ पे हमें इक्वेशन सॉल्व करना है. सो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू? कोई बताएगा कि हमें करना क्या है? यहाँ पे दे आर आस्किंग अस टू सॉल्व द इक्वेशन, बट व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू? सॉल्व करना है मतलब क्या करना है स्टूडेंट्स? यू हैव एनी आइडिया? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. सॉल्व करना है मतलब क्या करना है हमें? See, these are the equations in one variable. Okay, finding x value, that's great, Kadambari. Okay, so यहाँ पे हमें solve करना है, मतलब we have to find the value of x simply, isn't it? So कैसे solve करते हैं देखो.
सो पहली जो स्टेप है, उस पहली पहली स्टेप में हमने क्या किया कि जो इक्वेशन हमें दिया था वो एज इट इज लिखा। एग्जाम में भी आप ऐसा ही करोगे, जो हमें क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन हमें पहले एज इट इज लिखना है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। सो एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, कि इस स्टेप में आपने क्या परफॉर्म किया। सो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, इट इज मैंडेटरी। ओके, इसकी हैबिट लगा लो कि इस तरीके से आपको लिखना ही है। ओके, सो जब हम डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 3x² है वो बन जाएगा 6x², 5x बन जाएगा 10x, 7 बन जाएगा 14, 3 बन जाएगा 6, 4 बन जाएगा 8 और 3 बन जाएगा 6। ओके, तो इतना तो हो गया। अभी नाउ यूजिंग डिवाइड एंडो, नाउ व्हाई वी आर यूजिंग डिवाइड एंडो, सी व्हाई वी आर यूजिंग डिवाइड एंडो, बिकॉज सी यहाँ पे जो दो टर्म्स है और यहाँ पे जो दो टर्म्स है वो सेम है। सर बट व्हाई वी आर मल्टीप्लाइड इट बाय 2? ओके, दैट्स अ रियली ग्रेट क्वेश्चन। नाउ सी हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसका रीजन अभी हमें पता चलेगा। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, 3x² प्लस 5x प्लस 7 है। 5x+7 पे ध्यान दो। ओके, 5x+7 पे ध्यान दो। और नीचे क्या है, 10x+14 है। अभी 5x+7 को हम किस इंटीजर से या फिर किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमें 10x+14 मिलेगा। सो ऑब्वियसली दैट नंबर इज 2, इजंट इट, 2 है। सो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अभी राइट साइड में भी सेम देखो, न्यूमरेटर में 4x+3 है, 3x² प्लस 4x+3, और डिनोमिनेटर में 8x+6 है। तो हमें 8x+6 चाहिए न्यूमरेटर में भी, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे। ओके, सो दैट वाज द रीजन वी मल्टीप्लाइड बाय 2। नाउ अभी 2 से मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या हुआ, जब हम divide endo use करेंगे, when we use divide endo, so what will happen, what we do exactly in divide endo, we subtract the denominator from numerator। अभी ये हमारा न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था, तो हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड में। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी these two will get cancelled with these two and these two will get cancelled with these two। so हमारा जो इक्वेशन है वो अभी सिंप्लीफाई हो गया है, isn't it? ये अभी इक्वेशन हमारा सिंप्लीफाई हो गया है। ओके, नाउ दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर x इज इक्वल्स टू 0। सो x is the solution of the given equation। अभी why we are saying that this equation is true for x, क्योंकि मान लीजिए कि अभी हम दोनों साइड में x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो न्यूमरेटर में हमारे 6x² है, 6x² यानी कि लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर जो लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर जो है वो 0 हो गया, तो पूरी लेफ्ट साइड ही 0 हो जाएगी। सिमिलरली राइट साइड में अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो राइट साइड भी 0 होती है, मतलब दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर x इज इक्वल्स टू 0। this equation is true for x is equals to 0। so x is equals to 0 is a solution for the given equation। मतलब ये जो है वो एक सॉल्यूशन है। अभी अभी हमें दूसरा सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। दिस इज काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इजंट इट? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर इसे हम क्यूबिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। ओके, सो लीनियर इक्वेशन रहेगा तो लीनियर इक्वेशन के लिए एक्स की वैल्यू एक ही आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो x की वैल्यू 2 आएगी, 2 वैल्यू आएगी x की, बराबर। और क्यूबिक इक्वेशन रहा तो क्या होगा, कितने वैल्यूज आएगी x की? अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो हाउ मेनी वैल्यूज विल बी देयर? if it is cubic equation, so for cubic equation how many values of x we can find? 3 वैल्यूज। बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? कादम्बरी ने आंसर दिया 3। हमने पढ़ा है ना लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स चैप्टर हमने पढ़ा, उनमें हमने अलग अलग टाइप के इक्वेशंस पढ़े, याद है आपको? monomial, binomial, trinomial, polynomial, then we have seen linear equations, quadratic equations, cubic equations। याद है ना आप सबको? भूलना नहीं है। ओके, ओके, so if x is not equals to 0 then x square will not be equal to 0। now अभी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, देखो अभी हमें x is equals to 0 एक वैल्यू तो मिल गई इस इक्वेशन की,
x इज इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू मिल गई, अभी उस वैल्यू को हम साइड में रखते हैं बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट अदर वैल्यू एज वेल, दूसरी वैल्यू भी तो हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए, हम मानते हैं कि अभी x की वैल्यू 0 नहीं है फॉर एन इंस्टेंस क्यों, क्योंकि हमें x की अदर वैल्यूज भी तो फाइंड आउट करनी है, isn't it? हमें एक वैल्यू थोड़ी ना फाइंड आउट करनी है, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, सो हमें और वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हम x की वैल्यू 0 नहीं है ऐसा हम कुछ पलों के लिए मानते हैं। तो x की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 0 नहीं होगी, isn't it? Now dividing by 6x स्क्वायर, तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों साइड में 6x स्क्वायर से डिवाइड किया। अभी आप पूछोगे सर 6x स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड में डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर जो है वो 6x स्क्वायर है। ओके दोनों साइड में 6x स्क्वायर हमारा न्यूमरेटर है, तो हम 6x स्क्वायर से डिवाइड अगर करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन वो सिंप्लीफाई होके ऐसा बन जाएगा 1/10x plus 14 is equals to 1/8x plus 6। नाउ अभी ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन बन गया, isn't it? सी अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस डिनोमिनेटर को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इक्वेशन हैज नाउ बिकम what, this equation has now become a linear equation। so अभी इस 8x को ट्रांसफर करो यहाँ पे एंड 14 को ट्रांसफर करो यहाँ पे, so what happens, 6 minus 14 divided by, sorry 6 minus 14 is equals to 10x minus 8x, so minus 8 is equals to 2x, x is equals to minus 4, so x is equals to 4 and x is equals to 0 are the solution of given equations। now you will ask me, sir you were talking about, sir can we, sir we have to only divide with numerator, not necessary, not necessary कादम्बरी। सी अभी पहले केस में हमने क्या किया, सी दिस डोंट टेक इट एज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब कि हमें सिर्फ यही करना है, ये दिमाग में मत डालो कि पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करो बाद में न्यूमरेटर से डिवाइड करो, ऐसा नहीं करना है। मैथमेटिक्स में ऐसा कभी भी आप रट नहीं सकते, रटना भी नहीं चाहिए। आपको क्या ध्यान में रखना है कि व्हाट सिचुएशन डिमांड्स, मतलब कि हमारा इक्वेशन अभी क्या चाहता है। सो पहले केस में इक्वेशन चाहता था कि हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करें, सो हमने वो किया। अभी जब हम इस स्टेप में आए, तो इस स्टेप में जब हम आए तो इक्वेशन वाज डिमांडिंग टू डिवाइड बाय 6x स्क्वायर, मतलब जब हम इसे 6x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वहां पे करना ही है, हमने किया क्योंकि हमें उसे सिंप्लीफाई करना था। मे बी आप मतलब आपको कोई दूसरा ऐसा एग्जांपल मिलेगा जिसमें कि आपको डिनोमिनेटर में से कुछ कुछ चीज आपको कॉमन मिल जाएगी, तो आप उस केस में क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो कट जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कट जाएगा, वी डिवाइड 6 स्क्वायर ओनली विथ न्यूमरेटर। या व्हेन वी आर डिवाइडिंग, सो जब हम डिवाइड करते हैं तो वो न्यूमरेटर के साथ में ही डिवाइड होगा ना, एक्चुअली वी आर मल्टीप्लाइंग दैट विथ डिनोमिनेटर, राइट। तो 6x स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर के साथ में ही डिवाइड होगा। ओके हमें दोनों साइड मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके सो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो मतलब उसका मीनिंग ही चेंज नहीं हो रहा है। ओके आई होप यू गॉट दैट। ठीक है, so we have got these two values। now you will ask me, sir you were talking about कि this is cubic equation and we will get 3 values of x but still we are getting 2 values here only, right? दो ही values मिला है ना यहाँ पे, so it is possible like one of the value is 0। ठीक है, so मान लीजिए कि कोई हमारा cubic equation है तो उसकी value है -4 -2 और 2। this value, these 3 values are there, -4 -2 एंड +2। सो ये 3 वैल्यूज हमें मिल गई। लेकिन मान लीजिए कि हमारा कोई इक्वेशन है उसमें उसके जो वैल्यूज है या फिर उसके जो रूट्स है वो है -4 -0 एंड +0। सो आप कैसे लिखोगे +0 और -0 को, नहीं लिख सकते ना आप। सो इसके लिए वी राइट इट कॉमनली एज अ 0। okay so although it looks like a cubic equation but its actual values are only 2। okay one of the value is 0, so that's why दो वैल्यू से भी हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आई होप यू गॉट दैट पॉइंट, गॉट इट एवरीवन। only Kadambari is writing in the chat box, I need responses from everyone। okay okay Vedant, I hope you got it, nice, great, okay everybody is responding।
ओके, सो इसकी हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, इसके लिए हम एक और इसका एग्जांपल, सॉल्ड एग्जांपल लेंगे। सो सी, क्या करना है हमें यहाँ पे, सॉल्व सॉल्व करने में हमें यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो अंडर रूट के फॉर्म में दिया है। ओके, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज डिवाइड एंडो कॉम्पोनेंडो ऑपरेशन, डिवाइड एंडो कॉम्पोनेंडो ऑपरेशन यूज करेंगे। तो इसमें देखो क्या होगा, हमें इस, सॉरी फॉर दिस एक्स्ट्रा, इस डिनोमिनेटर को यहाँ पे ऐड भी करना है एक बार, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर भी करना है, जो कि हमने इस स्टेप में किया है। ओके, पहले तो आप ऐसे ऐसा लिख लोगे एग्जाम में, उसके बाद में आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ऐसे लिखोगे कि यूजिंग दिस ऑपरेशन, एंड सी दिस इज न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इस इसे हम कहते हैं कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंडो। सिमिलरली ऑन द राइट साइड वी आर डूइंग द सेम। सो इसमें क्या होगा कि ये जो माइनस, ये जो पॉजिटिव अंडर रूट एक्स माइनस टू है और नेगेटिव अंडर रूट एक्स माइनस टू है वो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव एक्स प्लस सेवन एंड नेगेटिव एक्स प्लस सेवन अंडर रूट एक्स प्लस सेवन कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो एट्रीब्यूट्स है या फिर या ये जो वैल्यूज है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस सेवन है प्लस अंडर रूट एक्स प्लस सेवन है, दिस इज, सो दिस इज ट्वाइस, सो यहाँ पे हम लिखेंगे टू अंडर रूट एक्स प्लस सेवन। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या है, दिस अंडर रूट एक्स माइनस टू और अंडर रूट एक्स माइनस टू है। अभी ये जो माइनस है, ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा। ओके, so I think this is looking very complicated. I will delete all of this. Okay, so the now the equation looks pretty simple. So यहाँ पे हमें ये मिल गया और राइट साइड में हमें ये मिला है, तो हम क्या कर सकते हैं अभी यहाँ पे, see this 2 gets cancelled with this 2, and we have 2 3s are 6, 2 2s are 4. So this is the value we are getting on the right side. Now squaring on the both side, अभी दोनों साइड में अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, x प्लस सेवन रहेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होगा, x माइनस टू इज इक्वल्स टू, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, टू का स्क्वायर फोर होता है, और वी हैव नाउ लीनियर इक्वेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि x प्लस सेवन मल्टीप्लाइड बाय फोर, दैट इज फोर एक्स प्लस ट्वेंटी एट इज इक्वल्स टू नाइन एक्स माइनस एटीन। So if you solve this, you will get answer as x is equals to 46 by 5 is the solution of given equation. I hope you get this as well. Any doubts in it? No doubts. Okay, great. Okay, so then we are ready to solve practice at 4.7 then. Okay, so question 1 is, everybody take your pen and notebook. Everyone will take your pen and notebook. So that taken, सब लोगों ने अपना नोटबुक और पेन ले लिया? Nobody is having dinner at this time, I hope. You might have already done the dinner, or maybe you will be doing after the lecture, but not during the lecture. Okay, so everybody has taken notebook and pen. I take it as like this. Okay, so question 1 is, first question is, if a by b is equals to 7 by 3, then find the values of the following ratios. So first ratio की value क्या होगी, कौन बताएगा मुझे? Who will tell me? What will be the value of first ratio? Tell me the value of first ratio. 5a plus 3b divided by 5a minus 3b. What is the value? And which operation you are performing? Tell me that also. Anyone?
No one got the value. Is it so hard? I hope it is not. Don't understand. Oh, no problem. No problem. We'll solve it. सो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम जो हमारी कन्वेंशनल मेथड है, उस कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी कि जो हमें एग्जाम में लिखनी है उस मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे, एंड देन वी विल वेरीफाई द आंसर बाय शॉर्ट ट्रिक। मतलब पहले हमें सॉल्व करना है लॉन्ग मेथड से, और शॉर्ट मेथड से हम क्या करेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो सही है या फिर गलत है। ओके, सो ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। 5/7 is equals to 20/28 is equals to 30. Okay, okay. Vaishnavi has tried something and I think that's good. Okay, fine. So see, क्या करेंगे हम यहाँ पे? पहले हमारे पास क्या दिया है? I'll write here. A by B जो है वो है हमारा 7/3. ओके, सो हमें चाहिए क्या? 5A चाहिए, 3B चाहिए। सो हम क्या करेंगे? 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स में। 5/3 multiplied with A by B, sorry, it should be A by B is equals to 7/3 multiplied with 5/3. Okay, now 5A divided by 3B will be equal to 7 5s are 35 and 3 3s are 9. So यहाँ पे हमें क्या करना है? ऊपर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर है और नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर है, मतलब हमें कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो ऑपरेशन यूज करना है, राइट? सो क्या करेंगे हम? 5A plus 3B divided by 5A minus 3B is equals to 35 plus 9 divided by 35 minus 9, so which is, so इसकी हमें वैल्यू निकालनी है ना, तो 35 plus 9 is 44 divided by 35 minus 9 is 26, and it should be how much? Tell me. 22/13. Got it or not? किस किस को समझ में नहीं आया? Got it. Okay. Kadambari has got the answer. बाकी लोग अंडरस्टैंड? ओके ओके। नाउ अभी मैं जिस शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा था, तो शॉर्ट ट्रिक में हमें क्या करना है? हमें आंसर वेरीफाई करना है, बराबर ना? सो उसमें हम क्या करेंगे? सी, अभी इस ए की जो वैल्यू है उसे 7 मान लो, ए की जो वैल्यू है उसे 7 मान लो, और बी की जो वैल्यू है उसे 3 मान लो। तो ए की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 7, 7 5 35, बी की वैल्यू हमने मानी है 3, सो 35 प्लस 9, और यहाँ पे 35 माइनस 9 हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से ये लिख लो। आपने अगर लिखा नहीं है ना तो ये लिख लो। डन। नाउ सेकंड वन इज इजियर वन, सॉल्व करो। सी, लॉन्ग मेथड से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। जिस मेथड से मैंने सॉल्व किया है ना अभी यहाँ पे, उस मेथड से ही आप एग्जाम में सॉल्व करोगे, और आप यहाँ पे लिखोगे कि यूजिंग दिस ऑपरेशन, मल्टीप्लाइंग बाय दिस। ओके, तो पहले एग्जांपल में हमने क्या किया था? 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? 5/3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि इक्वेशन वाज डिमांडिंग दैट। जैसा इक्वेशन रहेगा उस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना कोई डिफरेंस नहीं, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर? या, सो गो फॉर द सेकंड वन। 2a² plus 3b² divided by 2a² minus 3b²। pretty easy, and tell me the operation that you are performing। कौन सा ऑपरेशन है? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, which operation we are going to use here? Which operation is that? You can write the initials। इन्वर्टेंडो है तो I लिखो, अल्टरनेंडो है तो A लिखो, कॉम्पोनेंडो है तो C, डिवाइडेंडो है तो D, और कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो है तो C
डैश डी लिख सकते हो. So which operation is we are performing in the second one? Student, frankly and honestly tell me कि आपको ये समझ में आ रहा है, because this is very easy part and you have to get full marks in this. एक भी मार्क नहीं कटना चाहिए. Okay, how many of you solving? I didn't see any answer from you. Solving, great. And I would recommend don't use the short trick. Use short trick only to verify the answer. ओके, सिर्फ आंसर को वेरीफाई करने के लिए शॉर्ट ट्रिक यूज करो. आपको आंसर जो है वो कन्वेंशनल मेथड से, लॉन्ग मेथड जो है उससे ही फाइंड आउट करना है हमेशा. Oh, screen is not visible. I think screen is visible. Is it not, Kadambari? Not now also. Voice also not available. Yeah, yeah. Actually, I was on mute. Okay. You guys were solving the questions now, so that's why I was on mute. Okay. Kadambari visible na? Screen visible na? Okay. Vaishnavi is Vaishnavi is writing 9 upon 14 is equals to 27 upon 2.25 upon 3.5. Okay. Okay, you don't need to write upon Vaishnavi. You can write it like this. If your answer is this na 9 upon 14, so you can write like this. 9 upon 14 is equals to 27 upon 42 is equals to 2.25 upon 3 point, just a moment, 3.5. So you can write like this. But that is not the answer, Vaishnavi. I think you gave the answer for the last one also, like similar like this. But this is not the answer. You need to have a numerical value. मतलब हमें एक number चाहिए. Taking too much of time, students. Okay, so I will solve it. Shall I solve it? Okay, okay, good. No problem, no problem. Now see, students, you have to understand one thing here. Just a moment. Let me just erase the answer for previous one. So what I was talking about is यहाँ पे हमें a by b दिया है is equals to 7/3 दिया है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, a के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है? विच नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ a? विच नंबर इज इट? बताओ. विच नंबर इज इट? 2. ओके, गुड आयुष. विच नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ b? विच नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ b? 3 है. ओके, 3 है. तो अभी हमें a बाय b को और 7/3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा?
2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो? 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट बिफोर दैट यहाँ पे ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर को हमने बी से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर को हमने सॉरी या ए स्क्वायर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा, just a moment, yeah. So how do we write it? See, a by b is equals to 7/3 है, तो मैं इसे लिख सकता हूं a square by b square is equals to 49/9, squaring on the both sides. A square by b square is equals to 49/9, squaring on both sides. Okay, that is done. Now what we will do, 2 by 3 multiplied with a square by b square is equals to 2 by 3 is multiplied with 49/9. So यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2a square by 3b square, not 2a, 3b square. 2a square by 3b square is equals to, now 2 into 49 is 98 and 3 into 9 is 27. यहाँ तक समझ में आया सबको? 2a square by 3b square is equals to 98/27. कैसे आया? Got it? Yeah. Okay. Okay. Good. So let's move further. Now अभी हमें यहाँ पे क्या करना है? Componendo dividendo ऑपरेशन हमें यूज करना है। मतलब what we have to do, 98 plus 27 divided by 98 minus 27. That's it students, that is the answer. तो ये आंसर क्या होगा? 125 divided by how much? 71 is it? 125 by 71. Got it now? Got it now? Yeah, I hope you got it now. So now perform the third one. अभी थर्ड वन तो इजी है। सिर्फ थर्ड वन में हमें क्या करना है? कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो की जगह पे सिर्फ डिवाइडेंडो ऑपरेशन परफॉर्म करना है थर्ड वन में, राइट? अंडरस्टैंड ऑल, ग्रेट, गुड वन। नाउ सॉल्व द थर्ड वन। अभी थर्ड वन जल्दी से सॉल्व करो। 7 का क्यूब मैं आपको बता देता हूँ। 7 का क्यूब होता है 7 7 ज़र 49, 49 7 ज़र आई गेस 243 इज इट? लेट मी जस्ट कंफर्म वंस। 7 cube is 343 it is. Yeah, 343 it is. Right. So 7 का क्यूब होता है 343 और अ, और कौन सा नंबर है हमारे पास? 3 का क्यूब होता है 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27. So 343 minus 27 divided by 27. That's it. Got it everyone? अभी लिखो आंसर, सब लोग लिखो चैट बॉक्स में क्या आंसर आता है। Kadambari, you don't write answer please. You write answer after all of the students write. Okay? सब लोगों ने लिखने के बाद में तुम टाइप करो। Yeah. चलो, write down your answers now students. What is the final answer we should have? अभी आपको मैंने क्यूब भी बता दिया। चलो चलो, we don't have much time. Okay, Ayush, 316 divided by 7. Why 7 Ayush? Ayush, it should not be 7. It should be 27 ना? हमें डिनोमिनेटर मतलब b क्यूब क्या है? b क्यूब इज 27. ओके, चलो लिखो सब लोग। या
It is 316 divided by 27. Everyone write the answer. अगर समझ में नहीं आया है तो बता दो. I will solve it again here. Okay. Done? Great. किसने नहीं लिखा आंसर अभी तक यहाँ पे? वेदांत ने नहीं लिखा, वैष्णवी ने नहीं लिखा, लिखा है. I think वैष्णवी ने अभी लिखा है just. Yeah, वैष्णवी has written. आयुष, मेथा, you haven't written. Okay. तो ऐसे लिखना है आंसर. जब मैं बोलूंगा ना आंसर लिखो तो लिखना है. नाउ फोर्थ वन. अभी फोर्थ वन जल्दी से सॉल्व करो एंड वी विल क्लोज द क्लास फॉर टुडे. बाकी के जो एग्जांपल्स हैं वो हम अगले क्लास में लेंगे. ओके. सो फोर्थ वन के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको. सबसे पहले आप ही मुझे बताएंगे कि किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, एंड लास्टली व्हाट विल बी द आंसर. ये तीन चीजें आपने मुझे बतानी है. किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज which operation you are going to perform, and the last thing is answer. So कादम्बरी ने बताया कि we will multiply with 7 and 9. Not 7 and 9, actually it is 7 by 9. मतलब हम 7 by 9 से मल्टीप्लाई करते हैं. देखो ना अभी जो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने एग्जांपल लिखा है ना, उसमें हमने क्या किया है, 2 by 3 से मल्टीप्लाई किया है. 2 and 3 से नहीं, 2 by 3 से. 2 and 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब अलग होता है. ओके. आई थिंक तुम्हारा कहने का मतलब यही था, but you just wrote it in a different way. Okay. Okay, so डायरेक्ट आंसर भी लिख दिया कादम्बरी ने. दैट इज ग्रेट. लेकिन which operation did you perform कादम्बरी? which operation it was? which operation you performed on this ratios? You don't need to write complete spelling, you can write initials itself. CD. Okay, great. Now what about others? what about other students? समझ में आया सबको कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? चलो चलो जल्दी. It's night time. We now I started feeling sleepy. Okay, मुझे अभी नींद आ रही है. अभी हमें क्लास क्लोज करना है ना. So quickly give me the answers. चलो सब लोग आंसर्स लिखो अभी चैट बॉक्स में. सबसे पहले तो ये लिखना है कि डिवाइड, हमने डिवाइड किस नंबर से किया, सब लोग ये लिखो. चलो राइट डाउन. विच विथ मतलब हमने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया. विच नंबर इट वाज? ए बाई बी को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 7/9 से मल्टीप्लाई किया. वेरी गुड. तो राइट साइड में क्या हुआ स्टूडेंट्स? राइट साइड में भी हमें मल्टीप्लाई करना है ना. 7/3 को भी मल्टीप्लाई करना है. तो राइट साइड में क्या नंबर आएगा? 7/3 को अगर हम 7/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में नंबर क्या आएगा? 7/3 multiplied with 7/9. So 7 sevens are 49 and 9 threes are 27. मतलब 49/27 राइट साइड में आया. ओके. या 49/27. ग्रेट. नाउ ये अभी हमारे पास है. सो विच ऑपरेशन डिड वी परफॉर्म? अभी यहाँ पे हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया? सब लोग लिखो. विच ऑपरेशन इट वाज? ये इनिशियल्स लिखना है. कादम्बरी हैज ऑलरेडी रिटन. बाकी लोगों ने नहीं लिखा है अभी तक. ओके, आयुष हैज रिटन नाउ CD, दैट इज कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो. ओके वैष्णवी, ग्रेट. ओके, नाउ लास्टली लास्ट थिंग, व्हाट इज द आंसर? आंसर कैसे निकाला हमने, बताओ क्या है आंसर? व्हाट इज द आंसर स्टूडेंट्स? आंसर्स दे दो एंड वी आर गोइंग टू क्लोज द क्लास. सब लोगों के आंसर मुझे एक बार मिल जाए. कादम्बरी, आयुष, देन हुज रिमेनिंग? अदर आयुष इज रिमेनिंग. वैष्णवी हैज ऑलरेडी रिटन द आंसर. वेदांत एंड आयुष. Okay, I think they must be having dinner. Okay, no problem. So that's it students. आज के लिए बस इतना ही. जो बाकी के हमारे क्वेश्चंस है वो हम अगले क्लास में अच्छे से समझ लेंगे. Okay, I hope
क्योंकि हमने जो 4 क्वेश्चंस और पिछले आई थिंक कितने रिवीजन के मिला के हमने 7 क्वेश्चंस लिए हैं क्लास में, राइट? सो 7 के 7 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं. You can solve these questions anytime and you will use the long method, not the short method. Okay, मतलब सब स्टेप्स आपको लिखना है कि हमने ये एग्जांपल यूज किया. जब हम हमारे क्लासेस के भी टेस्ट होंगे, सो उसमें भी मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स दूंगा जो कि सारे स्टेप्स लिखेंगे. ओके, so yeah, that's it for today, and good night and bye bye. I will see you in the next lecture. Okay, bye bye, good night. Yeah, class has ended, and uh, yeah, Kadambari, I will inform you very shortly. Okay, about that. We haven't decided yet, but we will do that. Okay. Chalo, bye bye everyone. Yeah, Vaishnavi, leave the class. Okay.